Assalamu alaikum students, I am your teacher and welcome to our channel Learners Academy. So today we will discuss about past perfect continuous tense. So अब हमारा ये जो पूरा है पास्ट टेंस का कंप्लीट हो जाएगा पूरे 4 टेंसेस. तो अगर आपने मेरे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप अभी उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप पहले उसे देख लें, फिर आप बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो देखिएगा. बिकॉज इफ़ यू विल वॉच दैट बिफोर देन यू विल गेट द बेटर आइडिया ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा. सबसे पहले तो एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल सेंटेंसेस विद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सब्जेक्ट, वी यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब had and been. These two are the auxiliary verbs. Then main verbs and in the last object. So here many examples. I read just one. I had been working, or I had been playing tennis. I have read two. Okay, so first use duration before something in the past. We use the past perfect continuous to show that something is started in the past and continued up to till another time in the past. For 5 minutes, for 2 weeks are both duration which can be used with the past perfect continuous. Notice that this is related to the past present perfect continuous. However, so इसमें क्या बताया जा रहा है बेसिकली कि एक काम जो पास्ट में हमारा स्टार्ट हुआ था वो काम पास्ट में का कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहा और फिर वो काम पास्ट में ही ख़त्म हो गया. लेकिन वो ख़त्म पास्ट में ही हो गया, वो अब तक काम नहीं कंटिन्यूस है. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या चीज़ है कि वो काम हमने शुरू पास्ट में किया था बट इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन. दैट इज़ द present perfect continuous, not the past perfect. But in the past perfect tense the work has been done that was continuous in the past but it is not still going on. Okay, so examples: they had been talking for over an hour before Tony arrived. ठीक है, वो बात कर रहा था, पास्ट में उसने बात करना शुरू की है और उसने पास्ट में ही बात करना ख़त्म कर दी थी किसके, टोनी के आने से पहले. शी हैड बिन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years व्हेन इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस. सो दीज आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. You can read by yourself or you can practice. So remember non-continuous verbs and mixed verbs. We cannot add ing in all the verbs. There are many verbs that is non-continuous verbs or mixed verbs. We can't add ing with them. It is important to remember that non-continuous verbs cannot be used in any continuous tense, that will be not used. Also, certain non-continuous meanings for mixed verbs cannot be used in continuous tenses. Instead of using past perfect continuous with these verbs, you must use past perfect. Okay, so examples: the motorcycle had been belonging to George for years before Tina bought it. So had been belonging. Don't you think it sounds awkward? Because belong is the non-continuous verb. We can't add ing with it because it is non-continuous or mixed verb. It will not use in the continuous sentences. So the correct sentence is that the motorcycle had belonged to George for years before Tina bought it, and that is the correct sentence. And if you have any question, you may ask in the comment section. And don't forget to like, subscribe and hit the bell icon of Learners Academy channel. Thank you so much.